Bismillahirrahmanirrahim. Start I wish to say that the first chapter, आखिरी topic, that is cellular organization. Cellular organization. Cellular organization na matlab tshayda che tol jamdi shayna chedi ad cells na jordi. All living organisms are made up of all living organisms tol jamdi shayna are made up of cells. सारे जानदार ठोल जमदी शाइना बने हुए होते हैं जोड़ खड़ी शुवी भी फ्रॉम सेल्स द सेल्स ना इधर सेल्स पर बुनियाद बंदे ऑर्गेनिजम्स द्रे केस मा मिजुई द्रे केस मा जमदी शाइना वे मिश्तो से सरा मिलावेजी यो जमदी शाइना वे मिश्त सरादा से भी चावे दे यू सिंगल सेल ना जोड़ शुवी भी यो जमदी शाइना वेदासे भी चावे दे मेनी सेल्स ना जोड़वी खो टिश्यूज वे नहीं पशे और यो जमदी शाइना वेदासे चावे दे मेनी सेल्स ना जोड़वी पाशे वे टिश्यूज ऑर्गन सिस्टम वी नो दख पर बुनियाद बंदे मिश्त से सरा ऑर्गेनिजम्स चली ऑर्गेनिजम्स आर ऑफ three types. Three case mammal organism di on the basis of cellular organization. Cellular organization के बुनियाद पर living organisms तीन किस्म के होते हैं. नंबर यू था फर्स्ट वन तमीज यही unicellular organization or unicellular organisms, colonial organization or colonial organism, and multicellular organization or multicellular organism. On the basis of cells, number of cells के बुनियाद पर living organisms तीन किस्म के होते हैं. नंबर एक, फर्स्ट वन मिशगोरी unicellular organization. Unicellular organization की भी आगा ऑर्गेनिजम्स चे सिंगल सेल ना जोड़ कड़ी शुवी दोज ऑर्गेनिजम्स which are made up of single cell. आगा जमदी शाइना चे देयू सिंगल सेल ना जोड़ कड़ी शुवी भी एगे तवेला शी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन पदगजी श ऑर्गेनिजम्स चे भी all life activities टोले life activities चे भी are taking place टोल ए जिंदगी टोले एक्टिविटीज चे भी are taking place within the single cell. पयू सेल शनना the life टोले activities the जिंदगी टोले छारे पयू सिंगल सेल शके जी पदग सिंगल सेल से i.e. for example reproduction, digestion,
बच्चों ने पैदा कौल, खरोक कौल, एक्सक्रीशन, वेस्ट मटेरियल खरेजौल, मूवमेंट, हरकत कौल वगैरह वगैरह. स्टोले दगा एक्टिविटीज चेदी द विदिन द सिंगल सेल पदगी वो सेल शार शाई केजी दगे तमीज नॉम वेर गई यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. दगा यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन चेदा पदगे से डिवीजन ऑफ लेबर काम की तकसीम चेदा डिवीजन ऑफ लेबर काम की तकसीम इज एमंग different cytoplasmic organelles. एक सेल के अंदर मुख्तलिफ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स होते हैं, उनको अपना अपना काम दिया जा चुका होता है. पो सेल से ना ऑर्गेनेल अखपला चार मिलाव शो ये तदाचार कवा पदगी वो सेल से तोले एक्टिविटीज विद इन दिस सिंगल सेल के जी दगे तमीज नोम वेर कभी यूनिसेलुलर ऑर्गेनाइजेशन या दगे तमीज ये डिवीजन ऑफ लेबर इज अमंग द ऑर्गेनेल्स ऑफ अ सेल या अमंग द सेलुलर ऑर्गेनेल्स. एदग ऑर्गेनाइजेशन मिश्रा एग्जांपल सेकता एग्जांपल ये मिश्रा दा अमीबा, पैरामीशियम वगैरह वगैरह दगे एग्जांपल दा. द्वाम ग्रुप चे मिश्रा दा दैट इज colonial organization. colonial organization से चाहिए क्या जी पदग ऑर्गेनाइजेशन से देर लिविंग ऑर्गेनिज्म देर यूनिसेलुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म पयूज बंदे अस्ते जी गाड़ा गाड़ा लाइफ तेराई यो ऑर्गेनिज्म पबल डिपेंडेंट वी बल ऑर्गेनिज्म पबल डिपेंडेंट वी यो पयू बंदे डिपेंड कई सर्वाइवल दे पोरा अस्तोगने दे पोरा अबल बल बंदे डिपेंड कई सर्वाइवल दे पोरा अस्तोगने दे पोरा. नो दे मांस से टिश्यूज नहीं जुड़े शुए दी सारा कंबाइन शुई नहीं खाली फिजिकली पयूजे बंदे सारा गट शुई वास्ते जी द ऑर्गेनाइजेशन तमीज नोम वेर कई कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. सही के जी इन कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन colonial organization से सही के जी many unicellular organisms live combinedly without forming tissues or any other higher level of biological organization. टिश्यूज ऑर्गन वगैरह न जोड़ावी टिश्यूज न जोड़े जी पे ऑर्गन्स न जोड़े जी खाली डेर सेल्स पयूज ही बंदे प्रोतेई पयूज ही बंदे खाली अस्तोग ना काई आगा गाड गाड अस्ते जी लकदागा फॉर एग्जांपल यो कलोनी दो द गोल गोल चीज जोड़ाओ द टोल unicellular yo-yo organism, that is all are unicellular organisms. ये एक दामिष्ट से युवा कलोनी जोड़ा करला. दिस इज अ कलोनी. ये कलोनी है. इस कलोनी में दा गोरायो हर यो जोंता साइदा ऑर्गेनिज्म दा नो पदगजे से colonial organization से division of labor चेवी division of labor is among different cells या different organisms of the colony.
पदखलूनी से मुख्तलिफ ऑर्गेनिजम्स अखपल अखपल चार होता मुख्तस करिए शो ये i.e. for example some cells are specified for reproduction. अब बच्चियों पे ही दो कई सिर्फ some for मोर्टेलिटी अवे हरकत कई some for डिफेंस वे कई लगा मिसाल दाई वक्त कलूनी दो इसके अंदर कई हजार यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म रहते हैं पता से लेट्स सपोज दागा पार्ट चिदा दिस इज स्पेसिफाइड फॉर रिप्रोडक्शन नो दगे कलूनी से दग जाइवे चार विच दो चार पार्ट दा बच्चियों पे तो कई दिस पार्ट लेट्स सपोज is specified for defense of the colony. ये पूरी colony की defense करेगी. दगे को let's suppose these are specified for motility. दागा ज़े मिसाल के तौर पर हरकत कई. दसे different parts चेकिम दी चार चेकिम दो. अभी दगे colony पर मुख्तलिफ़े ज़े बंदे तकसीम शुव यही. चित्त दाज़े से चार कवा तदा दाज़े से चार कवा तदा चार कवा तदा चार कवा तदा चार कवा. Daga organisms chekim di survival of one member of the colony survival ramdi pote kedal ramdai sotal survival of one member of the colony depends upon another member of the colony. कॉलोनी के दूसरे मेंबर के ऊपर डिपेंडेंट होता है इसका सर्वाइवल. ये इसके बगैर नहीं रह सकता, ये इसके बगैर नहीं रह सकता, ये इसके बगैर नहीं रह सकता. द टोल कॉलोनी पयूबल बंदे डिपेंडेंट तो चे पयूबल बंदे डिपेंडेंट थे दगे तादग ऑर्गेनाइजेशन तमेजनो मेरे का कॉलोनियल ऑर्गेनाइजेशन. लाइक फॉर एग्जांपल इसके हमारे साथ एग्जाम्पल क्या हो सकते हैं. इसके एग्जाम्पल है हमारे साथ वॉलवॉक्स कॉलोनी. एक्वेटिक हैबिटाट से पेबे से मिश्तमिल अवेजी दाइबे बंदे जक्कलागा एबो मिश्तो से पढ़ते हैं स्नेशु ये दी दाइबे बंदे पोस सोशी चाशिन वाला पोशी आगा दे वॉलवॉक्स कॉलोनी भी दरियाम चे मिश्तरा किम लेवल दा दैट इज multicellular organization. Multicellular organization चाहिदा organisms those organisms which are made up of many cells, बहुत सारे सेल्स से जो बने हुए होते हैं उनको हम नाम देते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन. त्रै के जी दगज़ेश सेल combine and form tissue and organs. And finally, a multicellular organism. Finally, multicellular organisms. देखिए इस तरह example ये तो शायदा example ये चीज़ा all plants and animals edge example दी. All plants and animals are the example of this group. इस ग्रुप के सारे plants and animals इस ग्रुप के example होते हैं. मिसाल अगर हम plants देख ले तो हर एक प्लांट के दो पार्ट्स होते हैं. एक को हम नाम देते हैं वेजिटेटिव पार्ट और दूसरे को हम नाम देते हैं रिप्रोडक्टिव पार्ट.
vegetative part of flower plants and reproductive part of plants. Vegetative parts जैसे कि vegetative parts में हमारे साथ होते हैं root होते हैं, stem होते हैं and leaves होते हैं, और reproductive part में हमारे साथ कौन होते हैं? प्लांट के reproductive part में हमारे साथ होते हैं flowers. दगेगुंदे कचरे में एनिमल्स उगरी नो एनिमल्स के बॉडी के अंदर भी बहुत सारे सिस्टम्स होते हैं. मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, नर्व सिस्टम वगैरह वगैरह, और भी हमारे साथ होते हैं एक्सक्रीटरी सिस्टम, एंटेगुमेंटरी सिस्टम वगैरह वगैरह. तो ये हमारे साथ एनिमल्स बॉडी चेविया दे आगे बढ़िया मल्टी सेलुलर भी डाइजेस्टिव सिस्टम दे खरोकते पूरा, रिस्पायरेटरी सिस्टम दे सांस खुस्तले दे पूरा, एनर्जी पैदो कवरे दे पूरा, रिप्रोडक्टिव सिस्टम बच्चों पैदो कई, सर्कुलेटरी सिस्टम में बड़ी से सरंगे फ्लूइड मूवमेंट कई, ब्लड मूवमेंट कई, नर्व सिस्टम मैसेज इस तरह के जी ब्रेन सरंगे कंट्रोल कई बड़ी दागा मिश्रा पर नर्व सिस्टम. द एनिमल्स एंड प्लांट्स आर द एग्जाम्पल ऑफ मल्टी सेलुलर एनिमल्स. दगजी बंदे मिश्तो से सरा अल्हम्दुलिल्लाह फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट. नेक्स्ट चैप्टर भी इंशाल्लाह मिश्तो से नेक्स्ट क्लास ना स्टार्ट कई द ऑलमोस्ट 10-11 लेक्चर तो से सरा पद फर्स्ट चैप्टर से रोगल द चैप्टर टोल्स द कॉलेज पर सो टोल लेक्चर उगरी है इंशाल्लाह टोल वे तो से द कड़ाई का सब प्रॉब्लम भी सब क्वेश्चंस भी नो मिजियो क्लास द तबिया वेर कवाइशी तो से कमेंट्स से हर वीडियो बंदे पर कमेंट से तो से पल क्वेश्चंस रोकिए मिश्ता नो इंशाल्लाह यो मिज द फर्स्ट चैप्टर बंदे यो लेक्चर तोस्ता टोल क्वेश्चन सोल्यूशन दे पूरा यो लेक्चर मिज रिकॉर्ड कवाइशी रिकॉर्ड कई हुए इंशाल्लाह. इजाजत रखिए. अल्लाह हाफिज.